क्या अब मेरी आवाज आ रही है लीडर भाई? जी, बिल्कुल अच्छी आ रही जी। है आपकी आवाज़। तो बहुत अच्छा रहा कि मुझे किसी कारण समय लगा और इस बीच में दलाई लामा जी और निखिल चावड़ा जी को सुन लिया मैंने। दलाई लामा जी ने बड़े काम की बात की है। पहले मैं निखिल चावड़ा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। तो भाई साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ भी नहीं कह रहा, पर एक बात कहना चाहता हूँ जो जरूरी लगती है, जो आपको लीडर ने भी बोली। थोड़ा सा पचाने में कठिन ये सच है कि यदि किसी पंडित ने गलत किया है तो वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने वो संविधान दिया जिसके कारण हम खड़े हुए। निश्चित रूप से उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसमें बाकी लोगों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यही दूसरी बात तो तरफ, संज्ञो वाली है ना, यही तो संज्ञो वाली बात आप बोल अरे रहे हो। देखिए ऐसा है निखिल, आपने अगर मेरी स्पेस पे रहना है ना, सबसे पहला रूल ये है कि किसी स्पीकर के बीच में नहीं बोलना है। आपकी बोलते टाइम पे उन्होंने माइक नहीं खोला, तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं। आप सुने, आपने जवाब देना है, सीधे आप जवाब दीजिएगा उनकी बात खत्म होने के बाद निखिल जी। यश भाई कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो एक और निवेदन है निखिल जैसे हर व्यक्ति से। मेरी प्रोफाइल एक बार देख लो। मुझे कुछ भी बोलना है बोल लो भैया, संगी मत बोलो, गलत हो जाएगा। बाकी जो करना है करो, टोल करो, जो करना है खेलते रहो। तो आज का सच ये है कि ये भी सही बात है कि एक जाति का वाद, किसी भी जाति का वाद अगर बज रहा है, एक सीमा के बाद वो अति में बदल जाता है, वो गलत है। ये भी सच है कि जिन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जिस जातिगत जनगणना की बात हम कर रहे हैं ताकि आबादी को उसका हिस्सेदारी मिले, जिन दलितों के लिए हम जा जाके जगहों पर खड़े होते हैं, ये भी एक सच है कि उन दलितों में से कुछ लोगों का फायदा उठवाया जाता है। हरिजन एक्ट के नाम पे हर किसी के सामने कानून खड़ा कर दिया जाता है, और तब लोगों को अपनी एकता याद नहीं आती, लोगों को अपना व्यक्तिगत फायदा याद आता है। तो ऐसी कोई भी बात करने से पहले याद रखिए कि ये लड़ाई एक तरफ से ऐसा अंधाधुंध चिल्लाने से नहीं जीती जाएगी। और आइंदा, ये मैं खुला कह रहा हूं, किसी ने भी मुझे संघी कहा तो फिर मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। कोई गलती ना करे, कुछ भी बोल लो भैया। मेरा ट्विटर खुला हुआ है, लोग मुझे गाली गलौज सब करते हैं, रोज का है। संघी कोई नहीं बोलेगा मुझे, चाहे आप कुछ भी हो, कहीं के भी हो। खैर, एनीवे, तो जिस प्रकार हमारे देश के एक महापुरुष ने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित जगह पर अंग्रेजी बोली, उसी तरह कुछ बातें आज मैं जबरदस्ती के प्रिविलेज का उपयोग करते हुए अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसिडर in the light of Pahalgam and everything that is going on around in our country and worldwide is we are financially downtrodden. Our stock market does nothing but bloodbath every second day. Our economic condition is as poor as it could get. Our poor rich disparity is beyond pre independence levels, maybe pre 1815 57 levels. So, you're very welcome to discuss history, to be hell bent upon proving who's right and who's wrong. Yes, by all means. But the very first fact that you must consider in any decision making process is you cannot afford a war. You cannot afford a conflict. You can bloody not afford a second day meal if you quit your job. This is valid for most of us Indians. So, the first shard of sense that could enter your brain, I don't know, maybe by brain wave or a bullet through your head of truth, not the real one. Or maybe someone preach you by a slap or crap.
or maybe a meme or any bloody thing in this universe. The first thing that you could begin with is to focus more on the real issue. That is, we lack in army personnel. There is at least 2 lakh foot soldiers less. I'm calling it full soldiers by the medieval terms. There are junior commissioned officers, there are senior officers, there are technocrats, there are actual combat people, there are secret operatives, everything. We are at least 2 lakh short. And if you consider everything, it might go up to 3, if not more. This is why we are covering less ground per personnel or more territory to be covered by any personnel than he or she should. This is the very real problem why we are being attacked by any terrorist organization or by enemy or by anyone trying to capitalize on this situation. So whenever we try and get into if Kashmiris are good, if Hindu is the absolute best, if any other caste or religion is anything but not God, we are wasting our time. We are highest unemployed piece on the map. We lack our army personnel. The army that is serving lacks basic amenities, which is why we also saw the never before videos of our army people suffering for food. And subsequently, when one army personnel who was somewhere from UP basically came up with an empty pot and said that we are getting substandard food and we are here, then instead of being addressed with his issue, he was warned to not taint the national image. He should have come through the channels. Why the hell should he come through channels? If the government is easily campaigning on the base of army, then why should not army tell everyone that what the hell is actually going on? This is where our common sense comes in. Why did we not support our army when the very ruling section capitalizes on army? Now we are facing this shortage. Second thing, when we get over this army shortage, is our own common sense. I have no special uh, penchant for coming more than once on Twitter spaces, be it anyone's. But these days, I am spending twice or thrice a day, at least a couple of hours on spaces, only because me, the citizen of India, me, an ordinary Indian, does like this India in peace. And if by any chances any spark comes up, there's any match to the haystack, we are doomed. The first thing will happen in the event of Hindu-Muslim clash or any clash is our army will have to be deployed for peace. If it does not, we might see another Manipur. If it does, our porous borders get more vulnerable. So, yes, we are royally shafted. And if we do not want to be torn apart, we better start talking real. We have all the time in the world, if we survive this, to discuss Hindu, Muslim, Mughals, Khalistani, Maharaja Ranjit Singh, Indo Russian ties, the next iPhone, whatever the hell you want. But today, the single most important duty of every citizen of India or any Indian who's sentimentally connected to not incite hatred and to do everything in their capacity
सो वी स्टिक टुगेदर इन दीज टाइम्स। दैट इज ऑल लीडर भाई। यदि किसी को हिंदी सुननी हो तो मुझे बोल दें, बाकी अब मैं इंतजार करूंगा।